Okay, good afternoon, everyone. So, yesterday, so who is this Singh? Is this Arunima? किसका है? Arunima, is this you? Singh जो लिखा हुआ है? Arunima? Okay. So, yesterday we were talking about this Monte Carlo simulation. And have you all downloaded that Monte Carlo simulation, that crystal ball simulation software, crystal ball software? Have you all downloaded it? Crystal ball? चंद्रहास ने डाउनलोड कर लिया है और किसी ने? अच्छा, कुछ लोगों ने किया है. ओके, दैट्स गुड. So in that, what you will find is it's Excel spreadsheet based software. And so let's say if you want to do Monte Carlo simulation for reserve estimate, let's say we want to do reserve estimate. Okay, so ये सिंपल सा मैं बताऊं, बिकॉज यू नो अबाउट इट एंड देयरफॉर आई एम टेकिंग दिस. ओके, सो रिजर्व एस्टिमेट के लिए क्या चाहिए होता है? यू नीड एरिया. व्हाट एल्स यू नीड? यू नीड थिकनेस, you need porosity, you need saturation. What else you need? Area, thickness, space, 4 volume हो गए, इतना ही चाहिए ना? four of these parameters. Okay, now in deterministic approach, what do? You assign one particular value. Let's say A, you assign let's say 1000. Thickness, let's say you 1000. This, let's say you a square meter, and thickness, let's say you say 10 meter. Porosity, let's say you say 0.25, 25% porosity, and saturation, water saturation, let's say 0.1. Okay, and then what you do is you multiply this 1000 multiplied by 10 multiplied by 0.25 multiplied by 0.9, right? 1 minus SW, and whatever that will be in, let's say, meter cube volume. Okay, so that is your deterministic approach. Okay, but in case of probabilistic approach, in probabilistic approach, or many times it's called stochastic. Okay, or stochastic, what do? You basically you define some distribution function for area. So let's say area, you may define something like this, that this is your minimum, maximum, most likely. Okay, so this is, let's say you define minimum, and this you say maximum, and this is your most likely. Okay, triangular distribution. Okay, so you may have some triangular distribution. Let's say for thickness, maybe you can define some normal distribution. Let's say for porosity, you say I have some log normal distribution. And similarly for saturation,
you have certain, let's say, let's say normal distribution. Okay. So in Monte Carlo simulation, what it does is it randomly picks one value here, one value here, one value here, one value here, random. Okay, and then it multiplies and it gives 1. So so it will be probability will be multiplication of all those. Okay, probability of area, probability of thickness, probability of porosity, and probability of saturation. So you multiply all these, you get the probability for this one, and value you can get, area times thickness times porosity times stuff. Okay, it's of hydrocarbon. Huh? So that way you keep this random process going on. So let's say you take another random value here, randomly, it will and do multiply and you get this. And so what happens is ultimately for this volume, what you get is a probability distribution function, or maybe if you are looking at a cumulative probability, you will have that cumulative probability plot. Okay, so that is how you use probabilistic approach for your reserve estimate. Okay, ये सबको समझ में आया कि कैसे होता है? And so what I suggest is you use your crystal ball simulation. Try that one with these values. Let's say I give you area as 500 square kilometers, thickness, let's say 10 meters, porosity 25%, and water saturation is 10%. Okay, that is most likely. Okay, these are most likely values, and then these are most likely. Okay, and you can take minimum and maximum, maybe plus minus 100. This maybe some standard deviation of, let's say, a standard deviation. This is mean and a standard deviation of 2 meters, and similarly a standard deviation of, let's say, 5%, and this one, let's say, a standard deviation of 5%, and do this computation for your reserve estimate. Okay, so use your software and calculate it, probabilistic approach. Okay, so and the same thing, okay, you can apply this to your or your capex, opex, for your NPV. Okay, because you can put some probability distribution function to any value. Okay, and then you can do this forecasting. Okay, so ये एक करके देखो. Okay, and show me this one in the next class. ठीक है? चंद्रहास. यस सर. समझ में आया क्या करना है? हाँ सर, वैल्यूज पुट करने हैं और इसको करके देखो और सिमुलेशन रन करके देखो. ठीक है? yes, And yes sir. if it happens, it's all right. Otherwise, I will show you guys how to do it tomorrow. Okay? Yes sir. ठीक है, एक बार करके देखो. हाँ. Now, the question is, and should we take normal distribution function for all the normal distribution function?
for practice, you take these, and there are so many distribution functions that is shown, that is there predefined one, okay, in the software, okay. And as we proceed, we will talk about why should we take which particular distribution for which parameter, and how do we choose, okay. तो ये अभी बाद में आएगा, हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि हाउ डू वी चूज सर्टेन, हाउ डू वी डिसाइड कि कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन सा किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहिए. सो वी विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स लेटर. लेकिन अभी जो है सॉफ्टवेयर में खुद से एक रन करके देखो. Now, the next thing is mathematical expectation. So, expected value. So, expected value में क्या है कि it is defined as the product of numerical outcome of an event and its probability of occurrence. Okay. तो probability of occurrence से जब उसको multiply कर देते हैं that numerical outcome को, so that is what is called expected value, EV. Expected value. So if the outcome is financial, the product may be called expected monetary value or EMV. Okay, EMV. Okay. Expected monetary value. Basically, you have probability times the cash value. Okay, probability times the cash value, that is your EMV, expected monetary value. Okay, good. समझ में आया सबको? So, when you are making a decision for any decision, so मान लो कि you have several outcomes. Let's say outcomes are C1, C2, C3, C4, Cn. इस तरह से तुम्हारे several outcomes हैं, ठीक है? And all these outcomes have their own probability, P1, P2, P3, P4, and so on and so forth. Okay. And so the expected monetary value for that will be this summation of individual EMVs. Okay. ठीक है. तो अभी हम लोग इसका एक करेंगे, डिसीजन ट्री बनाएंगे. So we'll see how we do that. Okay. So in decision trees, basically it's a graphical representation of a sequential decision problem incorporating logic, value, and probability. क्या क्या है? Logic, value, and probability. ये तीन चीजें तुम्हारा decision tree में आएगा. Okay? So let us look at that. Decision tree थोड़ा इसको बढ़िया से समझना. Okay? Logic. Let's say you have an opportunity to acquire some exploration acreage. Do we acquire the license for that acreage? Do we have sufficient information to enable us to identify a drilling target? If we drill, what is going to be the outcome? Of course, because it's uncertain, so there is a probability of it. If the outcome is bad, let's say it's a dry hole, should we go for a second well? If the outcome is marginal, should we do testing, or what should we do? Okay, so ये जो है, these are different questions that comes to your mind. That is what you are going to put that in your decision trees. So let us look at this. So this is how you are going to build your decision tree.
let's say here you have to make a decision. Okay, so decision, let's say to acquire a license. Okay, so if you say reject, तो ये तो यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है. If you acquire the license, then you have, what are the options you have? Either you go for seismic, or without going for seismic, you can go ahead and drill a well. If you drill a well, you may have some positive outcome or negative outcome. Depending upon that, you can go ahead further. Now let's say if you decide to run seismic, then based on seismic, if it looks positive, then you go ahead and drill. If it looks negative, then you cross this. You don't go ahead. Now if you drill a well, then you have different outcomes. It can be a dry hole, or you may have it, may have a discovery, or you may have a marginal well. मतलब जिसमें थोड़ा बहुत गैस दिखा और ऑयल दिखा, marginal. Let's say if you have discovery, then you can decide go ahead and develop it. If you have a dry hole, then you have two options. Either you drill again, or you abandon the well, abandon the area. If you have marginal, maybe you want to develop it, maybe you want to do some further testing, or maybe you want to abandon it. So this is, a kind of simpler, form of decision tree that I am talking about. Okay. Such decision trees you can make for any, a decision that you are going to take. So let us look at one example. Here is one example. इसको थोड़ा बढ़िया से देखो, समझो. Here is you are making decision. These are nodes. Okay. ये nodes हैं और ये chance nodes हैं. ये जो B जो जैसे circular जो है node, ये chance node है, and square वाला जो है वो decision node है. ठीक है. Now let's say you have a license. So if you relinquish it, let's say it doesn't cost you. Okay, relinquish option doesn't cost you. So you put $0 here. But let's say if you want to do some preliminary studies and drill a well, okay, and that is going to cost you $1.5 million for this. Okay, इसको थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करो. If you need to ask me. Okay. Now let's say you go ahead with this route. Okay, preliminaries and drill. That is going to cost you, let's say, $1.5 million. So when you do that, you have here chance nodes. There is a chance of 20%. ये P जो है 0.20. That means 20% chance of that well becoming a good producer. There is a 30% chance of that well becoming a marginal well, and there is a 50% chance of that becoming a dry hole. Okay. Now, if it turns out to be a good producer,
it can give a revenue of $5 million. यहाँ पर revenue है, ये जो है ना revenue. Okay. So if it turns out to be a good producer, it can give you a revenue of $5 million. If it turns out to be a marginal, it can give you a revenue of $2.5 million. Now, if it turns out to be a dry hole, then you have this decision node. Either you drill second well, and let's say second well is going to cost you $1 million because here, you have already done preliminaries and some drilling ideas you have, and therefore let's say your second well is going to cost you only $1 million. If you decide to abandon this, it is not going to cost you anything. Now, if you drill a second well, there is now a good chance of it becoming a producer, 25% chance. क्योंकि already भाई तुमने एक well drill किया है, तो of course the second well you will have a better chance. And if it turns out to be a good producer, then you probably will have a revenue of $5 million. If it turns out to be a marginal well, which has 35% chance of becoming a marginal well, it's going to fetch you $2.5 million. And if it turns out to be a dry hole, it's zero. Now, if you have this decision tree, your manager is going to ask you what is the EMV, expected monetary value of this project. Expected monetary value of this project. बोलो, करके बताओ, ये जरा करके बताओ, इसका expected monetary value of this project क्या होगा? And when you have completed it, just raise your hand or send me chat message so that we can discuss it. ये बहुत ही important जो है ना decision tree जो है बहुत ही important होता है. Okay? तो इसलिए करके बताओ. If you have question, you can raise your hand, ask me, or ये decision tree बहुत ही helpful होता है to make your decisions. Okay?
ऑलरेडी आंसर्स आ रहे हैं। एक ने बताया 1.0625 मिलियन, एक ने बताया 8.0625, एक ने बताया 2.8, so let us discuss that। नहीं, पहले और लोग बनाओ पहले। 2.8, 2.81, okay, so many of you are saying 2.8। EMB of project is a 2.8, huh? Most of you are coming up with this number 2.8, 2.8125 or 2.81, okay, whatever। Any other number? शशांक, यस सर। कैसे किया? सर ये केसेस 1.5 बी से लिया सर, 0.3 इंटू 2.5, 0.2 इंटू 5, और सर फिर कहाँ से फिर से बोलो। सर 0.2 इंटू सर ये गुड प्रोड्यूसर के लिए 5 मिलियन, 0.2 से मल्टीप्लाई सर, फिर 0.3 का 2.5, ओके, और सर ये फिर 0.5 वाले में सर 2.3। नहीं तो शुरुआत कैसे किया? शुरुआत कहाँ से किया? सर बी पॉइंट से सर। बी पॉइंट से क्यों? सर ए पे सर अगर वो ऐसे थ्रू रिलिंग्विश ऑप्शन में जा रहा था तो 0 हो जा रहा था सर। नहीं, देखो सबसे पहले तो तुमको डी से शुरू करना चाहिए। यहाँ से तुम्हारा शुरुआत यहाँ से करना होगा। ओके, पहले यहाँ पर कैलकुलेट करो कि डी का एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू क्या है, कितना होगा ईएमवी डी का। सर एक सेकंड, 2.125। 2.125 सबका आया? पता नहीं आया। सी आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, ओके, सो वट एवर यू आर सीइंग 2.125 कैसे? 0.35 इंटू 2.5 प्लस हाँ 0.25 इंटू 5। ठीक है, so that comes out to be what? 2.125। 2.125, okay। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जो है, तो this is when you have already spent a million, ठीक है, that means 2.125 minus 1, okay। तो तुम्हारा C का जो है, मतलब क्योंकि यहाँ तो अबंडन करने का तो 0 है, तो ये तुम्हारा ड्राई होल होने का यहाँ पर जो कॉस्ट होगा, ठीक है, ड्राई होल ये वाला जो कॉस्ट होगा यहाँ पर, दैट इज 2.125 माइनस 1, 1.125 होगा। यस सर। एंड देन व्हाट यू डू, तब बी का ईएमवी निकालो। यहाँ पर ईएमवी कितना आएगा बी पर? 2.3125। 2.3125 3125। इतना सबका आ रहा है। इसमें कैसे किया? 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 प्लस 1.125 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है।
yes sir, तो ये आ रहा है 2.3125. yes sir, Okay, so if that is 2.3125, तो इसका एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू बी पर जो है दैट इज 2.3125. और तुमने जो है इसका प्रिलिमिनरी एंड ड्रिल के लिए जो है तुम्हारा 1.5 कॉस्ट है, तो इसमें से तो माइनस करना होगा ना. yes sir, तो 2.3125 माइनस 1.5, ठीक है. 0.8125, तो ए का जो है 8125, 0.8125 ए होना चाहिए ना. yes sir, तो इस डिसीजन का जो कॉस्ट है, डिसीजन का जो ईएमवी है, कॉस्ट नहीं कहेंगे, ईएमवी एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू. कॉस्ट तो तुम्हारा नेगेटिव में है ना, कॉस्ट तो माइनस हो जाता है, तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू जो है 0.8125. आई डोंट नो, मीन्स ये तुम लोग जो बताया मैंने वही किया, हमने इसका प्लस माइनस नहीं किया, तुम लोगों ने जो बताया वही किया. यही होना चाहिए ना, yes sir, या कहीं गलत है इसमें? डिसीजन ट्री तो ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं? yes sir, तो इसका डिसीजन ट्री बनाओ तुम लोग, ये होम असाइनमेंट. The home assignment is, there is a field, name is Lobster Field. It's a small onshore reservoir. The field is currently producing 11,800 barrels of oil per day. The operator is considering whether to work over the producing wells in order to improve the performance of the field. The major impact of the work would be to improve productivity in the short term, but at the expense of production in the longer term. Some improvement in overall recovery is also expected. Now, here are the things. The workovers would cost 10 million and could be completed during 2020. ये तो लास्ट ईयर का मैंने नंबर दे दिया था, ठीक है, तो उसी साल में हो गया. As a result of the accelerated production मतलब as a result of accelerated means if you do workover, then you are kind of you can produce more. That is what accelerated production. The field life is expected to be reduced by 1 year. ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूस फास्टर रेट से करोगे ना, तो 1 year रिड्यूस हो गया. With a saving of 2 million in fixed OPEX, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि 1 year का जो है वो तुम्हारा सेविंग हो गया 2 million इन दैट ईयर, क्योंकि ये रिड्यूस होगा तो लास्ट ईयर में होगा ना, तो लास्ट ईयर में, तो फिक्स्ड ओपेक्स जो है तुम्हारा 2 million. वेरिएबल ओपेक्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन अमाउंट्स टू अबाउट $1 per barrel. ठीक है, वेरिएबल ओपेक्स. दीज कॉस्ट आर इन 2019 टर्म्स. अगर ये करते हो तो करंट प्रोफाइल बनाया हुआ ये, ठीक है, 2020 का करंट प्रोफाइल बनाया हुआ है. But then since you do work over, your accelerated profile could be this one, where you are saying that in the 10 years, ये जो लास्ट में तुम $2 million बचा लिए फिक्स ओपेक्स में, ठीक है. Okay, now
You are required to advise the operator whether to proceed with the planned investment. And the current policy of the company is to assume an oil price of $50 per barrel, constant in real terms over the life of the project. In this case, taxation and inflation effects are to be ignored. Advice करना है. Problem लिख लिए? प्रीवियस स्लाइड चलो ओके ये वाला हाँ ये स्लाइड देख लो ठीक है तो ये बनाओगे ना ठीक है तो इसको तुम लोग ट्राई करो अरुणिमा इसका तो लग रहा है माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा दीपांशु इसका भी माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा चंद्रहास यस सर यस सर ये प्रॉब्लम कैसे टैकल करोगे सर वो टोटल पहले कितना रेवेन्यू आ रहा है वो पता करेंगे ओके फिर कॉस्ट पर बैरल हमको पता है तो नंबर ऑफ बैरल्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओके तो टोटल रेवेन्यू वहाँ से पता चल जाएगा ठीक है देखेंगे कि प्रॉफिट ठीक है इसको तुम ट्राई करो हाँ इसको तुम लोग ट्राई करो now another thing that I want to talk about is you know when you wait when you make decisions उसमें जो है you take different parameters जिसमें कि एक था हमने बताया था कि NPV then I told you about ये क्या था दूसरा payback period then एक और होता है IRR NPV निकालना सब लोग समझ गए हो NPV कैसे निकालेंगे हाँ NPV का तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए NPV निकालने में
एनपीवी में क्या होता है, बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एनपीवी जो होता है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बताया ही है। सो व्हाट यू डू बेसिकली इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके, you calculate what is your outflow and what is your inflow, okay। cash flow जो है, cash flow over a period of time तुम calculate करोगे, ठीक है। so let's say first year, second year, third year, fourth year, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and so on and so forth, okay। so you are going to calculate your cash flow. So let's say cash flow is 1 CF2 CF3, so on and so forth, okay। that is cash flow. Cash flow is what? That means your inflow minus outflow, right? कितना आ रहा है कितना जा रहा है, that is your revenue minus cost, right? ठीक है। इसको receipts minus disbursement, right? कितना आया और कितना गया, that is what cash flow. So for every year you are going to do that, and then you are going to do this with then there is a discount factor or some interest rate that you are going to use to bring this all these values to present, okay। तो वो तुम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके देखा है कि 1 प्लस आर ये जो था ना नंबर ऑफ इयर्स एंड इक्वल था, सो whatever that factor is, so ये तुम लोगों ने किया है, ठीक है। and so for every year, for each year you do this and you will have that cash flow. तो ये एक्सेल में भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा होता है एक्सेल में करना, बट यू शुड डू दैट। तो इस तरह से जो है what you are going to get is for any project, okay, this cash flow that you have built, from that you are going to get their present value, कि उसका आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है, okay। so that you are going to get NPV, okay, for that project. So of course if you have if you have a higher present value, that means that it is more likely that you are going to take up that project if you have higher NPV, net present value. Now the next thing that we also talked about was the payback period. Payback period में हम लोगों ने क्या कहा कि if we have investment over a period of time, ठीक है, how fast you are going to recover this, okay, how fast you are going to recover this. तो यहाँ पर जो है cumulative net cash flow इधर कर देंगे, ठीक है, cumulative net cash flow, and then you are going to say where that payback period is, okay, where that payback period is, ठीक है। So the smaller the payback period, the more likely you are going to make investment, ठीक है, okay। This axis is time, right? There is number of years and cumulative net cash flow, and so that way you can you can say that what is the payback period. So जितना भी कम होगा payback period, that means more likely you are going to have expenditure on that one. Then comes what you called is
IRR. IRR जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. So basically what happens is when you are calculating your NPV के लिए हमने एक रेट जो है अस्यूम किया था R. ठीक है, हमने जो है रेट अस्यूम किया, तभी तो हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं. But then what happens is based on the rate, okay, your NPV may be something like this. Okay, if let's say this is R, rate of return, and this is NPV. So let's say for lower rate of return, this is the case, positive NPV. अगर कोई एक ऐसा rate of return है where NPV becomes 0, so that also you need to keep in mind. क्योंकि अगर internal rate of return जितना IRR का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, you are most likely to invest. IRR उतना क्यों है? क्योंकि अगर IRR, इसका मतलब है कि अगर मान लो इन्फ्लेशन जो है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 20% अगर होता, मान लो कि लेट्स से IRR is 20%, ओके, रेट हियर इज 20%. इसका मतलब ये कि 20% जब होगा तब जाकर मेरा जो उसका वैल्यू है जाकर 0 होगा. एंड वी सी दैट मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू बी अराउंड 7%. तो हमारा ठीक है भाई, 7% पर हमारा स्टिल पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है, एंड देयरफॉर हायर दिस IRR, तुम्हारा जो है likely that you are going to invest there. ओके, तो ये जो है IRR भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो NPV हुआ, पेबैक पीरियड हुआ, IRR हुआ, and then also there are some other factors that you can use, that is profitability index. We'll talk about these things in the next class. Profitability index, PI. Okay. यही ये मेन होता है. और भी क्या है, क्या मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी. ये हमारे पास 3-4 जो होते हैं. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी ठीक है. ये 4 जो है ना, ये मेन होते हैं. ठीक है, बाकी तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एंड यूनिट टेक्निकल कॉस्ट, एनपीवी, पेबैक पीरियड, आईआरआर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये 4 जो होते हैं ना. पहले एनपीवी बनाना सीखो. पहले एक जो है ना, बुक से जो एक नंबर लो, चाहे मैं एक तुमको देता हूं नंबर. ओके, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, ये कैसे होता है. एक जो है ना कैश फ्लो, एक कैश फ्लो लो, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद करके देखो, तभी जाकर तुम्हें क्लैरिटी आएगा. ऐसे कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ऐसे क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए एक नंबर लो पहले, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, जो है दिस ईयर दिस मच इज कैश फ्लो, नेक्स्ट ईयर दिस इज कैश फ्लो, थर्ड ईयर दिस इज कैश फ्लो, फोर्थ ईयर दिस इज कैश फ्लो, and then calculate NPV and also then calculate IRR. Okay, so when you do that you will understand. उसको प्लॉट करो साथ में. ओके, तब जो है समझ में आएगा. ठीक है, so I'll find out if there are some good examples which you can use for your estimation. एक मेरे पास है क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो, इसको देखता हूँ, इसको कॉपी करके देना पड़ेगा. इसको मैं एक्सेल में है, बट आई हैव टू
अच्छा मैं देखता हूँ इसको जो है ना, विल सेंड दिस टू यू गाइस, ठीक है। तो अनलेस until you do it, okay, you won't be able to understand it, okay. So एक्सेल में कर लो, अगर पेपर में भी कर सकते हो अपने आप, but if you want to do it in Excel spreadsheet, you can do that too, okay. तो करोगे तभी समझ में आएगा। Okay, any question? और एक हमने जो अभी दिया उसको जो है कल करके बताओ कि कैसा आ रहा है डिसीजन ट्री, ठीक है। Okay, so if there is no question, then I stop here, ठीक है। चलो बाय।